everyone, welcome back to the channel. So in this video we are going to discuss about Unit 5 Man and Machine of the book New Pathways by Oxford. We are going to discuss section 1, The Diamond Maker. Name of the lesson is Diamond Maker, which is written by h.g.wells, Herbert George Wells. So let's start. Let me tell you first about the writer. Herbert George Wells was an English writer. He was prolific in many genres. He wrote dozens of novels, short stories, and works of social commentary, history, satire, biography, autobiography. His works also included 2 books on recreational war games. And he was a novelist known for his tales of scientific fiction. Many of his books have been made into films. His best-known works are The Time Machine, The Invisible Man, and The War of the Worlds. So this was about a writer, Herbert George Wells, popularly known as H.G. Wells. So let's start with the lesson, The Diamond Maker. So as you all know, side by side I'm going to read the lesson and explain you accordingly. Okay, so let me tell you a short note about this lesson, that this lesson is based on 2 people only. Only 2 people are there in this lesson. There is a conversation in the beginning and we get to know about a person who is a diamond maker. So the story revolves around him only. So let's start. Page number 114, Unit 5, Man and Machine, Section 1, The Diamond Maker. Read about a scientist who has devoted years attempting to make artificial diamonds. So we get to know by this line only that this lesson is all about the diamond maker. Okay. I was in Chancery Lane at about 9 in the evening. After a hard day's work, I had a little headache and was not interested either in entertainment or any more work. I decided to move away from the noise and go down to the embankment and rest my eyes and cool my head by watching the multicolored lights upon the river. Through the arcs of the Waterloo Bridge, one can watch different colors of light as well as the towers of Westminster. So by this paragraph, first thought which comes to our mind is that these lines are said by the diamond maker, but no, there's another narrator जिससे आगे डायमंड मेकर का कन्वर्सेशन होता है. So this person is there and that person is quite tired and he's spending his time in the Chancery Lane near the Waterloo Bridge. And here embankment means a street which is along the north bank of the river Thames in central London. So he wanted to rest his eyes, cool his head by watching the multicolored lights of the river. Multicolored lights of the river means the reflection of the lights which are on the river, which looks like multicolored. Through the arcs of the Waterloo Bridge, one can watch different colors of light as well as stars of the Westminster, as we can see in this picture also. A warm night, said a voice by my side. Here's another person, entry of another person. I turned my head and saw the side of a man. Now here is the description of that another person. I turned my head and saw the side of a man who was leaning over the parapet beside me. So parapet is a railing along the edge of the bridge, this thing. Okay. It was a sophisticated face. Sophisticated here means that person was stylish, refined and complex looking. So he was quite a gentleman, if we can say that. Face handsome, though tired and pale. So first appearance of that person was in 2 ways. That person looks sophisticated, handsome but tired and pale as well. That means वो पहले बहुत अच्छा रहा होगा, ड्रेसिंग बहुत अच्छी होगी, but that person is tired, तो इसलिए वो थोड़ा अजीब लग रहा है. I looked at him curiously. Would he have anything to tell me? He looked intelligent. Very warm, said I, but not too warm for us here. So this was a line said by the narrator. No, he said, still looking across the water. It is pleasant enough here, just now. It is good, he continued. So now, this line and this line is said by the another person only, not by the narrator. It is good, he continued after a pause, to find anything so relaxing as this in London after one has been worrying about the business all day. I don't know
what one would do if it is one not of such a pacific corners. Now pacific corners here means a peaceful soothing place. Okay, he spoke with long pauses as that person was tired and we can say a bit stressed. That's why that person was talking quite slowly, taking a pause with every line between the sentences. He was taking the pauses. Sometimes I doubt if it is of any importance. I feel like throwing away everything, name, wealth, and position, and do some small business. Now, this was the line said by the diamond maker. Okay, he was quite stressed, and that's why he was telling all these things that I'm very much frustrated with my business. I want to do something small. I'm not able to handle this. Okay, he became silent. I looked at him in astonishment. We were quite shocked with the conversation, with all the sentences or the words that person said. If ever I saw a man hopelessly poor, it was the man in front of him. कि अभी तक लाइफ में मैंने इतना होपलेसली पुअर पर्सन अपनी नहीं देखा है, आज तक देखो तो सिर्फ यही पर्सन होगा. He was ragged, he was dirty, unshaven, unkempt. He looked as though he had been left in a dustbin for a week. So this is the description of that man कि जो उसकी हालात थे, that was very bad. His clothes were ragged, he was looking dirty, unshaven, unkempt, and looked as if he had come from the dustbin. He was left in the dustbin for a week, and he was talking to me of the wearisome worries of large business. कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा है. दैट मीन्स उसकी जो बातें थी वो उसकी पर्सनालिटी को देख के सूट नहीं कर रही थी. जैसा वो दिख रहा था उस अकॉर्डिंग उसकी बातें सूट नहीं कर रही थी. I almost laughed outright. उसकी बात में मैं थोड़ा सा हंसा. Either he was mad or playing a sorry joke on his own poverty. या तो वो पर्सन मैड है या फिर वो अपनी गरीबी का ही मजाक उड़ा रहा है. The disadvantage of being in a high position, said I, कि सबसे बड़ा नुकसान जो होता है हाई पोजिशन का होता है, is that you have to work hard and have to worry a great deal. कि आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है और हर चीज़ के लिए वरी भी करना पड़ता है. But the advantage is that you can help the poor. That gives a lot of satisfaction. लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आप किसी भी पुअर की हेल्प कर पाते हो. भले ही हमें हार्ड वर्क करना है. जो पर्सन अच्छे पोजीशन पे होता है, हायर पोजीशन पे होता है, दैट पर्सन हैव टू वर्क हार्ड एंड वरी अ ग्रेट डील. की हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत टेंशन भी लेना पड़ता है, स्ट्रेस भी लेना पड़ता है. बट द बिगेस्ट एडवांटेजेस कि वो जो अपने से छोटे हैं, जो पुअर हैं, उनको हेल्प कर सकता है और वही सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है. This was the line said by the narrator. We can see the another person. He looked at me and said, "You won't understand." So that person is saying कि आप मेरी situation को और मेरी बात को नहीं समझ पाओगे. After the moment's silence, he spoke again. No doubt, it is very strange. You will not believe me even when I tell you. Now that person थोड़ा सा silence के बाद that person again said, "No doubt, it is very strange." ये बात बहुत strange है. You will not believe me. आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे. Even when I tell you. I feel it is quite safe to tell you. Okay, इस person को देख के वो कहता है कि it is quite safe कि मैं आपको ये बात बता सकूं. And it will be a comfort to tell someone. I really have a big business in hand. A very big business. But there are problems now. The fact is, he takes a long pause and said, I make diamonds. So, this was the line said by the diamond maker. I suppose, said I, you are out of work just at present. कि हो सकता है तुम डायमंड बनाते हो, but you are out of work at this present time. See children, this story, which is written by h.g.wells, this story is written during that era when there was a time when people used to make diamonds, synthetic diamonds. Okay, ये एक ऐसा एरा था जब न्यू डिस्कवरी हुई थी सिंथेटिक डायमंड्स की, एंड उसी के बेसिस पे, उसी टाइम के बेसिस पे रियल डायमंड्स के को शो करके फेक डायमंड्स को सेल कर दिया जाता था. और यही सारी सिचुएशंस जो है होती थी, उसी बेसिस पे जो है h.g.wells ने ये वाली स्टोरी का भी एग्जाम्पल दिया. ओके, आई सपोज सेड आई, यू आर आउट ऑफ वर्क जस्ट एट प्रेजेंट. कि अभी तुम
काम नहीं कर रहे हो, आउट ऑफ वर्क मीन्स शायद तुम्हारी जॉब चली गई है या फिर तुम्हारा काम नहीं चल रहा है. आई एम टायर्ड ऑफ पीपल नॉट बिलीविंग मी. वो कहता है कि मैं थक गया हूँ कि लोग मेरी बात पे बिलीव नहीं करते. सी दिस लाइन ऑल्सो ना, इससे भी पता चलता है कि नरेटर ने उसकी बात पे बिलीव नहीं किया था. आई एम टायर्ड ऑफ पीपल नॉट बिलीविंग मी, he said with irritation. Then suddenly he unbuttoned his wedged coat. Wedged means जो काफ़ी फट चुका था, worn out coat था, पुराना हो चुका था. And pulled out a little canvas bag. There was a small canvas bag. It had a cord round its neck. He opened it. उसने जो है छोटा सा बैग निकाला, cord around it, जो जैसे हम पोटली वाला जो बैग होता है छोटा सा, that bag. He pulled out that bag from his from his coat and opened it to show him what he had actually, and took out a brown pebble. So there was a brown pebble in that bag. I wonder if you know enough to know what that is. He handed it to me. अब कहता तुम्हें अगर थोड़ा बहुत भी पता होगा तो तुम इसको सब देख के पहचान जाओगे कि क्या है एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है. That brown pebble. A year ago, now this is the line said by the narrator only, वो अपने बारे में बता रहा है. A year ago, in my free time in London, I had studied for a science degree. So, जो हमारा नरेटर है, जो स्टोरी बता रहा है, उसने ये भी बताया कि वो लंदन में कुछ टाइम के लिए अपने फ्री टाइम में साइंस डिग्री उसने पढ़ी है, साइंस के बारे में उसने पढ़ा है काफ़ी कुछ. So, I had a bit knowledge about physics and mineralogy. So he know a bit about minerals. This thing looks like an uncut diamond. और ये जो ब्राउन पेबल था वो क्या लग रहा था, एक अनकट डायमंड जो अभी प्रॉपर शेप में नहीं आया, इसको प्रॉपर कटिंग नहीं मिली है. सो दिस वॉज एन अनकट डायमंड ऑफ द डार्कर टाइप. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमंड. सो ये वाला जो डायमंड था वो डार्कर टाइप का था एंड इट वॉज अनकट. आई सॉ इट वॉज टू बिग एंड हैड द शेप ऑफ अ रेगुलर octahedron. Octahedron is a geometrical shape with 8 sides and 8 faces. Okay, 8 sides और 8 faces. So वो डायमंड इस वजह से अनकट भी लग रहा था और काफ़ी बड़ा था. I took out my pen knife. So उसने अब उसको चेक करने के लिए कि ये रियल डायमंड है या नहीं, अपना पेन नाइफ निकाला and tried to scratch it. उसने उसको स्क्रैच करने की कोशिश करी. It could not do it. So ये फर्स्ट टेस्ट था जिसमें वो चीज़ क्लियर हुई कि वो एक्चुअली एक डायमंड ही है. I went under the light and tried it on my watch glass. और फिर उसने अपना उसको वॉच ग्लास पे स्क्रैच करके देखा और जो ग्लास है वो स्क्रैच इजीली हो गया. So this was the second test he has done on that. I looked at it with rising curiosity. कि मैं उसको काफ़ी ज़्यादा हैरानी से देख रहा था. It certainly is rather like a diamond. कि ये तो डायमंड की तरह ही है. But if so, it is a very big diamond. ये बहुत बड़ा डायमंड अगर ये रियल है तो. Where did you get it? कि इतना बड़ा डायमंड तुम्हें कहाँ से मिला. So अभी भी हमारे नरेटर को इस बात पे विश्वास नहीं था that person is a diamond maker. I made it, he said. Give it back to me. He quickly put it back in his jacket. I will sell it to you for 100 pounds. उसने कहा कि मैंने इसको बनाया है और मुझे वापस दो. मैं तुम्हें तभी दूंगा, मैं तुम्हें उसे सेल कर सकता हूँ for 100 pounds. He said suddenly, whispered. बहुत लो वॉइस में उसने ये बात कही. This made me suspicious again. I felt it could be a lump of some hard substance called corundum. Corundum is a natural occurring transparent material, a crystalline form of aluminium oxide. So corundum जो है यूज होता था instead of a diamond, fake diamond के basis पे. May be possible कि ये उसका lump हो और जो कि मुझे diamond लग रहा है. That also resembles a diamond. If it was a diamond, how did he find it and why should he offer it for 100 pounds? कि अगर ये actually में diamond है तो इसको कहाँ से मिला, और अगर मिला भी तो ये मुझे सिर्फ 100 पाउंड्स में क्यों देगा, इतनी लो कॉस्ट वैल्यू में क्यों देना चाहता है. We looked into one another's eyes. He looked honest. मैंने उसकी आंखों में देखा. अगर आपको कभी किसी को एक्चुअली जज करना होता है तो आप उनकी आंखों में देखते हो. So basically this is the easiest way to guess that person is lying or not. So that person looked honest कि वो सच बोल रहा था. At that moment I believed it was a diamond
एंड ही वॉज ट्राइंग टू सेल, कि मैंने बिलीव करा कि वो डायमंड है और वो उसको सेल करना चाहता है. येस, येट आई एम अ पुअर मैन एंड कैन नॉट वेस्ट 100 पाउंड्स की, बट स्टिल आई एम अ पुअर पर्सन और मैं 100 पाउंड्स इसके ऊपर वेस्ट नहीं कर सकता. ही वॉज अ गुड रिच पर्सन बट स्टिल डायमंड्स के लिए वो इतने 100 पाउंड जो है वेस्ट नहीं करना चाहता एक डायमंड के लिए. नो सेंसिबल मैन वुड बाय अ डायमंड बाय द डिम लाइट ऑफ अ ट्रैम्प. ओके, एक बेगर से वो कोई भी पर्सन जो होगा सेंसिबल पर्सन, वो किसी भी बेगर से डिम लाइट में डायमंड नहीं खरीदेगा. बट अ डायमंड ऑफ दैट साइज वुड कॉस्ट मेनी थाउजेंड्स पाउंड. वो 100 पाउंड्स में सेल कर रहा था, और अगर ये एक्चुअल डायमंड है तो एक्चुअल डायमंड जो इस साइज का होगा वो थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स में सेल होगा. सो वो काफ़ी लोअर कॉस्ट में उसको सेल कर रहा था. हाउ डिड यू गेट इट, आई आस्क्ड अगेन. आई मेड इट, वॉज हिज रिप्लाई अगेन. I had heard something of Moissan. Moissan here is a French chemist and a Nobel Prize winner. He attempted to make synthetic diamonds. So इसको लगा कि उसी के तरीके से मे बी इसने कोई गड़बड़ करी है. But I knew his artificial. So Moissan's artificial diamonds were very small. I shook my head. So मैं थोड़ा सा confused हुआ. मे बी ये कोई चीज़ fake हो या Moissan से related हो, but no. You seem to know something of diamonds. So this is the line said by the diamond maker, कि तुम्हें diamonds के बारे में थोड़ा बहुत पता है. I will tell you a little about myself. अब मैं तुम्हें अपने बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ. Perhaps then you may like to buy it. फिर शायद तुम उसको खरीदना चाहो. He turned round with his back to the river. There's a situation कि अब वो जो है river की तरफ face करके जो है पूरी बात बोल रहा है. And put his hand in his pocket. He sighed. I know you will not believe me. Here again he said कि मुझे पता है कि तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे. Diamonds, he began, are to be made by throwing carbon out of the combination in a suitable flux. So जो है केमिकल मिक्सचर के अंदर जो है डायमंड को कार्बन कॉम्बिनेशन में कार्बन बना के उस अकॉर्डिंग जो है सूटेबल फ्लक्स में केमिकल मिक्सचर में जो है डाला जाता है अंडर अ सूटेबल प्रेशर. और एक सूटेबल प्रेशर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द कार्बन क्रिस्टलाइजेस, जो कार्बन है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाता है, सॉलिड क्रिस्टल से बन जाता है. आउट नॉट एज ब्लैक लेड और चारकोल पाउडर, ना तो वो ब्लैक लेड बनता है और ना ही चारकोल पाउडर बनता है, बट एज स्मॉल डायमंड्स. लेकिन वो क्या बन जाता है, एक स्मॉल डायमंड. नाउ आई वॉज सरप्राइज्ड. ही वॉज टॉकिंग लाइक एन एजुकेटेड मैन. सो नाउ दैट पर्सन वॉज सरप्राइज बिकॉज अब थोड़ा सेंसिबल सामने वाला पर्सन लग रहा था जो डायमंड मेकर था. अब वो थोड़ा ट्रू साउंड कर रहा था. एंड नरेटर वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि इसको जो है काफ़ी नॉलेज है डायमंड्स के बारे में, क्योंकि उसने पूरा प्रोसीजर जो है डायमंड्स के बारे में उसको बताया. ही कंटिन्यूड, सो मच हैज़ बीन नोन टू केमिस्ट फॉर ईयर्स, कि मुझे बहुत काफ़ी कुछ जो है मतलब साइंटिस्ट को केमिस्ट को पता है काफ़ी सालों से. बट नो वन हैज़ येट फाउंड आउट हाउ टू हैव द राइट प्रेशर. लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता चला कि बेस्ट रिजल्ट के लिए कौन सा राइट प्रेशर होता है जिसके अंदर जो है कार्बन एंड बाकी केमिकल्स डाल के रखने चाहिए. Therefore the diamonds made by the chemists are small and dark. इसीलिए जो बाकी जिन्होंने डिस्कवरी करी है, उन्होंने जितनों ने भी डायमंड बनाया है बाकी केमिस्ट ने, दे आर स्मॉल एंड डार्क एंड वर्थलेस एज ज्वेल्स. और वो ज्वेल्स के बेसिस पे बिल्कुल वर्थलेस है. नाउ आई हैव गिवन अप माई लाइफ टू दिस प्रॉब्लम, गिवन माई लाइफ टू इट. सो इस प्रॉब्लम के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड करी है एंड पूरा टाइम मैंने इसी के ऊपर फोकस किया है. सो वी आर गोइंग टू डू इट टिल हियर ओनली इन दिस वीडियो. If you have any problem, do let me know in the comment section, and in the next part I will explain you the rest of the lesson. Have a nice day.